Okay, bacho. So we were talking about covalent bonding in the last class. So let's have some a brief, you can say that comparison between ionic bonding and covalent bonding. So let's have a comparison between ionic and covalent bonding, right? So this is ionic and this is covalent, right? Bete, Mahat, can you please mute your mic, Bete? Mahat, can you please mute your mic? Thank you. Okay, so what is ionic? Bacho, we did this in the last class, or you can say that in the last topic. We know that what is ionic. What is ionic, Bacho? Ionic is a bond which is formed between metal and non-metal. What do you say, Bacho? Is that right or not? This is the bond between metal and non-metal. Yes. Right? Right, sir. And if you talk about covalent, so this is always between non-metal, right? So it is always non-metal to non-metal, right, bacho? Right. If you talk about the definition of ionic, so this is actually electrostatic force of attraction, right? This is electrostatic force of attraction between opposite charges. What do you say, bacho? Is that right or not? Yes, sir. Yes, There sir. is force of attraction between opposite charges. This is the definition for the best definition for ionic bond. And if you talk about covalent bonding, bacho, so this is actually mutual sharing of electrons, right? This is mutual sharing of electrons, right? Right, bacho? Yes, Right? sir. Yes, sir. Now this is the difference that I am going to write over here. This is the main and the best difference that you need to understand for the past papers questions. The best of best, right? So you need to remember this whenever a crystal is going to be formed of ionic bond, we know that it will be like this. We know that each positive is attracted by 6 negatives and each negative is attracted by 6 positive. We know that this is the giant ionic lattice, right? This is giant ionic lattice. So agar aapke paas main puchun what is the structure of ionic compounds, you can say that, sir, this is the giant ionic lattice, right? Whatever the ionic compound is, if you have NaCl, if you have MgO, if whatever the ionic compound you have, you always say that, sir, iska structure kaisa hoga? Iska structure hoga giant, bahut bada hoga, ions wala hoga और lattice type होगा, ठीक है? तो it will be giant lattice, right? Giant ionic lattice, ठीक है बच्चों? Yes, sir. And then if you talk about covalent compounds, so just for suppose I draw a carbon dioxide over there, so it will be like this. It will be like this, and we know that over here, this is a simple structure. This is a simple structure. You can name this structure as simple molecular structure. You can call this as simple molecular structure, right? Yes, ये sir. बहुत important है. This is very important to remember. आपको पता होना चाहिए कि ionic bonding की definition क्या होती है. आपको पता होना चाहिए इनका structure जो है आपके पास वो क्या होता है. और if you talk about the properties, of ionic and covalent, so you need to remember this कि ionic compound most of the time कैसे होते हैं बच्चों? Mostly ionic compounds are solids, right? Right, sir. Right, sir. And if you talk about covalent compounds, so mostly you can say that they are liquids and gases. Mostly they are liquid and gases. In fact, they are like covalent solids as well, but most of the time you will see that they are liquids and gases. And if you talk about their melting points, so we know that they have very high melting and boiling points. And if you talk about covalent compounds, so they have low melting and boiling point, right, bacho? Right, Yes, sir. sir. Right, sir. And if you talk about solubility, so ionic compounds are soluble in water, and over here mostly covalent compounds are insoluble in water. Mostly, not all.
We know that HCl is soluble in water, so we are saying mostly, right? Then the last one is when ionic compounds are soluble in water, they have free ions. They have free ions, free moving ions in the solution, so they can conduct electricity. So you can say that they can conduct electricity in molten and aqueous state. They can conduct electricity in molten and aqueous state. And you can say that mostly they are insulator. Mostly are insulators. वो नहीं करते electricity conduction. ठीक है बच्चों? सही है. एक्सेप्शनल लिखें ग्रेफाइट या बस छोड़ दें? बेटा ग्रेफाइट तो सिर्फ नॉन मेटल है ना. ग्रेफाइट तो सिर्फ नॉन मेटल है. वो उसमें अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं डेफिनेटली, बट वो नॉन मेटल है. वो कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं आएगा. कोवेलेंट कंपाउंड में अगर एक्सेप्शंस आप लिखना चाहते हो तो वो आप HCl लिख सकते हो. HCl कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके सर. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को कोई मसला? नो सर. अब एक सवाल मैं पूछ लूं, एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं और वो इसी से रिलेटेड होगा. मतलब जो अभी राइट नाउ स्क्रीन पर मौजूद है उसी से रिलेटेड. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. सो कैन आई आस्क? Sure, sir. Yes sir, sure. Yes, sir. Okay, so get ready for the question. You need to write the answer in your copy and then you need to send that to me as well, right? Okay, sir. Okay, so let me find the question for this. Covalent bonding. We don't have covalent bonding right now on the screen, so we need to check this. So covalent bond. Okay, so just give me a minute, bachcho, so I can find question for you. I think it will be in ionic bonding. Yes, it will be here. Yes, this one is a question, bachcho. This is a question for you. You can see over here that in this question, we have what? We have NaCl as a structure and chlorine as a structure, and this is of 4 marks. Just look at over here, the marks of this question, 4 marks. So I want you guys to write the answer of this and get 4 marks from me. If any one of you is getting 4 marks from this question, that means you are well prepared for this chapter. Otherwise, you are not. So look at the question properly, start solving this, and start sending me the answers of this on my WhatsApp so I can check are you doing well or not, right? Start. To get the 4 marks in this question, you need to be very vigilant to answer this question. 4 marks मिलेंगे कैसे बेटे? 4 marks आपको ऐसे मिलेंगे कि आपसे जो उसने पूछा है आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो. आपसे उसने कहा है आपके पास NaCl है, आपके पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना. NaCl जो है आपके पास, दिस इज आयोनिक बॉन्ड एंड दिस इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है ना. वो कह रहा है आपने बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर से डिफाइन करना है. आपने बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर से डिफाइन करना है, उसके बाद आपने कंपैरिजन भी करना है, ठीक है ना. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग
electrostatic force of attraction between ions. This is having strong electrostatic force of attraction between ions. Ionic compound में आपके पास क्या होते हैं? Ions होते हैं. तो this is strong electrostatic force of attraction between ions. ये ions के दरमियान है. This is the bond. This is the attraction between ions. तो आप बच्चों क्या बोलोगे इसको? This is intramolecular force. You can use this word for ionic compound. This is intramolecular force because this is the force of attraction between the ions. ठीक है ना? तो आप इसको बोलेंगे this is intramolecular force. आप क्या बोलोगे इसको? This is intramolecular force. यार अब्दुल बाहर तो यार Secondly, बेटे अरीब माइक म्यूट कीजिए अपना. बहुत बुरी. अरीब अपना माइक म्यूट कीजिए. चलें, तो यहाँ पर आपके पास NaCl जो है इसके अंदर जो बॉन्डिंग है ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. ये आयंस के अंदर बॉन्डिंग है, इसको इसीलिए आप क्या कहेंगे? इट इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स. ठीक है ना? इंटरमोलिकुलर फोर्स आप यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पर. पहली बात, जो आप जिन्होंने यूज किया है वो उसको काट दें, वहां आपका नंबर कट जाएगा. ठीक है. उसके बाद कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन है, इसके आसपास एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल घूम रहा होगा, इसके आसपास एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल घूम रहा होगा. तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का जो वर्ड्स है, वो जो वर्ड आप यूज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो आप यूज कर सकते हैं कोवेलेंट के लिए, आयोनिक के लिए यूज नहीं कर सकते भाई. क्लियर है बच्चों? ये बात आपने ध्यान में रखनी है. आयोनिक कंपाउंड के लिए आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यूज करोगे, आपका नंबर कट जाएगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर सर. यस सर. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप सिर्फ यूज कर सकते हो कोवेलेंट के अंदर, और यू नो दैट यू कैन यूज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ओवर हियर और यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ओवर हियर. अगर आप ये यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज दिस इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर. ठीक है ना? अदरवाइज आप अगर ये सिंपल बोलना चाहें कि इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग है, ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं. और इसके अंदर अगर आप बोलना चाहें कि इट हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो आप ये भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? दूसरी बात कि आपसे वो कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर भी डिफाइन करो. तो भाई आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था. इट इज जाइंट आयोनिक लैटिस. दिस इज जाइंट आयोनिक लैटिस एंड दिस इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ये कैसा होगा बच्चों? दिस इज सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ऐसी होगा बच्चों? जी सर. तो आप क्या लिखेंगे? आप देखिए आंसर आप कैसे लिखेंगे, आंसर को आपने फ्रेम कैसे करना है. वो कह रहा है कि आप पहले बताओ आयोनिक कंपाउंड के बारे में, फिर वो बोल रहा है आप जो है कोवेलेंट कंपाउंड की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर भी बताओ, फिर वो बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, यानी कि आप कंपैरिजन भी करके बताओ. ठीक है ना? तो तीन चीजें पूछ रहा है आपसे, तो आपने तीनों चीजें बतानी है, तब आप आंसर आपका लेवल 3 पे होगा, जो कि लेवल 3 पे हम सबने जाना है. लेवल 3 के आंसर्स चाहिए हमें, हम लेवल 3 पे जाना चाहते हैं. ठीक है ना? तो लेवल 3 का आंसर अगर आपको चाहिए तो व्हाट यू वांट, आपको करना ये होगा कि आपको लिखना पड़ेगा NaCl having ionic bonding. You can say that NaCl is having strong electrostatic force of attraction with a giant ionic lattice structure. ठीक है? पहली बात, पहला नंबर आपको इस चीज का मिलेगा. आप बताएंगे NaCl having high or strong electrostatic force of attraction with a giant ionic lattice, while आप लिखेंगे covalent, या आप लिखेंगे while chlorine has weak intermolecular forces with a simple molecular structure. ठीक है? आप क्या लिखेंगे? while covalent having weak intermolecular forces with a simple molecular structure. ठीक है ना? इसी वजह से आप उसके आंसर में लिखेंगे conclusion, that is why NaCl required a lot of energy to overcome. ठीक है ना? That is why NaCl required more energy to overcome. That is why NaCl required greater energy to overcome. इस तरह अपना आंसर लिखेंगे ना, तो आपको मार्क्स मिलेंगे सबसे ज्यादा, 4 नंबर मिलेंगे पूरे आपको इसमें, क्योंकि आपने बॉन्डिंग भी डिफाइन कर दी, आपने स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर दिया, आपने कंपैरिजन भी कर दिया. जी रामीन कुछ पूछना चाह रही हैं? सर प्लीज रिपीट कर दें आंसर.
आंसर आप लिखें, आप लोग आंसर लिख सकते हैं। आंसर में मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ NaCl या there is strong electrostatic force of attraction between the ions of NaCl. Remember this, you need to use the word ions over here in ionic compound. एक बच्चे ने यूज किया, पता नहीं किस बच्चे ने, यहाँ मॉलिक्यूल लिख दिया। बेटे मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज करोगे नंबर घट जाएंगे। मॉलिक्यूल सिर्फ कोवेलेंट में होते हैं, आयोनिक में आयंस होते हैं। आयोनिक, देखो आयोनिक निकला किससे, आयन से निकला है ना, तो आयोनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, ठीक है ना, और मॉलिक्यूल्स होंगे कोवेलेंट में। तो अगर आप लिख देंगे देयर इज you can say that there is a strong electrostatic force of attraction between the molecules of ये गलत हो जाएगा, between the molecules आप नहीं लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, ions लिखेंगे, ठीक है भाई। every one of you need to remember this, ionic compound में ions यूज करेंगे और covalent compound में आप लफ्ज molecule यूज करेंगे। और अगर आपको intermolecular forces का लफ्ज यूज करना है तो covalent में आप intermolecular यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको NaCl वाला यूज करना है तो ionic में आप यूज करेंगे intramolecular, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर होती है इसमें अट्रैक्शन, बाहर नहीं होती, अंदर होती है अट्रैक्शन। सो यू कैन से दैट NaCl having strong electrostatic force of attraction between the ions, right, with a giant ionic lattice, with a giant ionic lattice, with a giant ionic lattice, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है आपके पास, with a giant ionic lattice। ये एक बात पूरी हो गई आयनिक कंपाउंड की, आपने साइड में कर दी। फिर आप लिखेंगे while chlorine molecule is a, ये आप लिखेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन, ये आपके पास जो भी गिवन है क्लोरीन गिवन है, while chlorine having weak intermolecular forces, ये लिखेंगे आप क्लोरीन having weak intermolecular forces with a simple molecular structure। ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का नंबर मिलेगा आपको, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये की वर्ड है इस आंसर में, तो इसका नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो क्लोरीन हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आखिरी में आप कंक्लूजन कर रहे हैं तो कंक्लूजन करने वाले को 14 नंबर मिलेगा। अगर आपने सिर्फ बॉन्डिंग और आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बातें कर दी और आपने कंक्लूड नहीं किया आंसर को, आपने फ्रेम नहीं किया आंसर को, तो फिर आपको 14 नंबर नहीं मिलेगा। चौथा नंबर सिर्फ उसको मिलेगा, फोर्थ मार्क सिर्फ उसको मिलेगा जिसका लेवल 3rd होगा, सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो बच्चा होगा जो इस आंसर को देने के लिए पूरा रेडी होगा, ठीक है ना। तो 3rd लेवल क्या होगा कि आप इसमें कंक्लूजन लिखें कि देयरफॉर NaCl रिक्वायर्ड ग्रेटर एनर्जी टू ओवरकम, ठीक है भाई। यस सर। ओके सर। जी मोइस कुछ पूछना चाह रहे हो बेटे? आयान पूछना चाह रहे हैं, पूछे आयान। तो सर सिर्फ एक मार्क कंक्लूजन के लिए होता है? एक मार्क यहाँ पर कंक्लूजन के लिए, क्योंकि उसने कंपैरिजन करने का बोला है ना आपको। अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा ना, उसने कंपेयर करने का बोला है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर कंपैरिजन क्वेश्चंस में एक मार्क हमें कंक्लूजन के लिए होता है ना? एग्जैक्टली, देखो कंपेयर करने का बोला है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब भी मैंने लफ्ज यूज किया वाइल क्लोरीन हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर करके ना, क्योंकि उसका नंबर है, ठीक है भाई। यस सर। आगे चलें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आप लोग? जी सर ठीक। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया है, अब हमारे पास रह गया जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, वी कैन सिंपली डू दिस। चलें, इसका आंसर मुझे कौन बता सकता है? बहुत आसान है। सर पार्ट ए बताऊं? आप सॉल्व करके मुझे भेजे ना।